So in our last class we were discussing about vectors, and towards the end we were talking about vector addition, adding Yes, two sir. vector. So there are two processes: triangle law, parallelogram law. Triangle law से हमें क्या पता चला that the resultant is also a vector quantity where its magnitude is under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, and direction can be given as tan alpha is equals to b sin theta by a plus b cos theta, where alpha is the angle with a vector. इतना Yes, हमने sir. देखा। और हम अभी Yes, बात कर रहे हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बट देन parallelogram law of vector addition is also there. So let's go and study about parallelogram law of vector addition. So write down the headline. Parallelogram law of vector addition. So इससे पहले स्टेटमेंट को तुम लिख लो. If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given by diagonal of the parallelogram, अभी पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होगा, उसमें से कौन सा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, कोमा देके लिखो, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, passing through the intersection of two vectors. Now what does that means? That means is that let us consider here is one vector A vector and here is another vector B vector, and the angle between them is theta, right? Now when we are going to add them, if we are going to add them by parallelogram law of vector addition, तो फिर इसको एक parallelogram पहले बना लो. Now this is the parallelogram. In this case, the resultant of the two vectors can be represented by the diagonal of the vector. Now, but there are two diagonals. एक ये बड़ा वाला diagonal, एक ये छोटा वाला diagonal. Which diagonal it is talking about? Diagonal of the parallelogram passing through the intersection of the two vectors. ये point से जो diagonal जा रहा है, that means it is talking about this diagonal. So that means this will be the resultant. This will be the resultant R vector. Yes. Yes, sir. Now what will be the magnitude of R vector and what will be the direction of R vector? देखो simple same logic को हम यहाँ पे भी apply कर सकते हैं कि अच्छा parallelogram law of vector addition says that its resultant is nothing but R is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, and the angle and the direction can be defined as tan alpha, where alpha is the angle between a vector and the resultant alpha. Tan alpha is equals to b sin theta divided by a plus b cos theta. But wait a second, this is exactly the same formula what we got in triangle law of vector addition, it is, isn't it? Yes, देखो sir. सेम चीज आ रहा है, ऐसे कैसे? The reason is that देखो ये अगर b वेक्टर है तो इसको पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ पे लेके आ जाओ तो you are getting my point? ये भी b वेक्टर Yes, हो sir. जाएगा because it is parallel.
तो हम a के साथ इसको ऐड करें या फिर इसको ऐड करें, क्या फर्क पड़ता है? बोथ द वेक्टर्स आर सेम. So now if we are going to add this vector, then by applying triangle law, you see we are getting this resultant. This one is the resultant. Yes. And therefore we'll be getting the magnitude to be the same as well as the direction to also be the same. So इसलिए तुम चाहे triangle law of vector addition apply करो या parallelogram law of vector addition apply करो, you'll be getting the same answer only. There is no difference. So you can unbox this formula. Yes. चलो 3 तो प्रॉब्लम दे रहा हूं, सॉल्व कर लो. क्वेश्चन नंबर 1, you have to calculate the resultant. Let us consider in this case this is one vector having magnitude 10 and this is another vector having magnitude 8 and this is the angle between them 120 degree. Applying parallelogram law of vector addition, you just solve, find out the resultant. Resultant कैसे निकालोगे? यहाँ पे पहले एक parallelogram बना दो and then draw the diagonal. And this one is r. R का formula put करके निकाल दो. निकालो कितना आ रहा है? No, sorry, this one is 120 degree. ये कैसे होगा? इसको तो छोटा रखना पड़ेगा ना. 60 डिग्री कर लेते हैं. Let's consider this is 60 degree. 120 डिग्री मतलब तो इधर होगा. ओके ठीक है. So find it out. Apply the formula. Only magnitude I want. So root 244. Under root of 244. Correct answer. So in this case, resultant will be r is equal to under root of 244. Correct answer. Next question. Let us consider here is a vector having magnitude 15 and here is another vector having magnitude as 20. Apply parallelogram law of vector addition and calculate the resultant. Parallelogram. तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? इसको पहले parallelogram law के हिसाब से रखना होगा. Now you see they are representing two sides of a parallelogram. Then draw the parallelogram and then put the answer. क्या हुआ? हो पा रहा है कि नहीं? 25. Yes, it will be 1025. Correct answer. Next, let's consider here is a vector having magnitude 10 and here is another vector having magnitude 20 and this angle is given as 60 degree. अब निकालो. No answer yet? 20. Yes. अच्छा पूछना पड़ेगा क्या हर बार? Answer is coming 20.
Yes, sir. अच्छा, डाउट आ रहा है। r is equals to 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 into 10 into 20 into cos 120. Cos 120 is minus 1/2, उसका स्क्वायर रूट। Sir, रूट 2 कैंसिल हो गया। sir, इसका 300 आएगा, रूट 300 में 2 मल्टीप्लाई हाँ, करना under root of 300, that will be coming out to be 10 root 3. ठीक है। So resultant in this case will be 10 root 3. मिस्टेक हो रहा है अभी भी। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, तो फिर हमने दो वेक्टर के लिए हमेशा बात की है ना। In case of triangle law of vector addition, we used 2 vector. In case of parallelogram law of vector addition, we used 2 vectors. What if there is more than 2 number of vectors? So in this case, what to do? क्या कर सकते हैं हम इस केस में? So under that case, we are going to use, there is a law called as polygon law of vector addition. So make a star mark and write it down. Polygon law of vector addition. Now, what is polygon law of vector addition? It is nothing but the extension of triangle law of vector addition. So therefore, write it down. It is an extension of triangle law of vector addition. It is an extension of triangle law of vector addition. अब ये कहता क्या है? ये कहता है कि देखो, मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर, मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है बी वेक्टर, मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है सी वेक्टर, मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है डी वेक्टर, मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है ई वेक्टर। इतना ले या फिर और ले, इतना भी काफी हो जाएगा। सो लेट अस कंसीडर वी आर गोइंग टू ऐड 5 वेक्टर्स। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको पहले प्रॉपर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर लो। सो दैट मींस ए वेक्टर का हेड में बी वेक्टर का टेल को रख दो, बी वेक्टर का हेड में सी वेक्टर का टेल को रख दो, सी वेक्टर का हेड में डी वेक्टर का टेल को रख दो, डी वेक्टर का हेड में ई वेक्टर का टेल को रख दो। यस, डायग्राम थोड़ा उल्टा हुआ, इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं हम। लेट अस कंसीडर ई वेक्टर हमारा ऐसा होता है। So this one is E vector. So now I have organized everything. So now how to add them? Now what we want? We want A vector plus B vector plus C vector plus D vector plus E vector. ये सारे के सारे वेक्टर्स हमें चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पहले A और B को ऐड कर दो, तो फिर रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस विल बी द रिजल्टेंट। एंड ये वेक्टर कौन सा होगा? ये वेक्टर मेरा हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये सब नो, देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट। नाउ दिस इज द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसके साथ सी वेक्टर को ऐड कर दो, हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? हमारा रिजल्टेंट ये हो जाएगा। दिस इज द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, vector A plus vector B plus vector C. So similarly with vector A plus vector B plus vector C, you just add the vector B. So what we are going to get? We are going to this vector, हमें ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। So this vector is A vector plus B vector plus C vector plus D vector. Now in addition to all these 4 vectors, you just add the E vector. What we are going to get? We are going to get this vector. And what is this vector? This vector is nothing but A vector plus B vector plus C vector plus D vector plus E vector. So क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे देखो ये एक पॉलीगॉन बन गया हमारा, so that's why the name is given as polygon law of vector addition. In this case, the vectors which we are going to add, they are representing one sides of n+1 vector, और या फिर अगर ये n sided polygon अगर हम बोलेंगे, then all these vectors they are representing one sides of the n sided polygon, right? So then the resultant is given as the closing side. That's all. If they are representing in proper order, then the resultant will be the closing side. That's all. Statement लिख लोगे? Yes, sir. Is the concept is clear to you? Yes, sir. Okay, ठीक है. So लिख लो. If a number of vectors are represented by a number of vectors are represented by n-1 sides of a n-sided polygon, n-1 sides of a n-sided polygon, then the resultant is given by the closing side of the polygon, कोमा देके लिखो, taken in opposite order, taken in opposite order. So this is what is polygon law of vector addition. इसका use बहुत कम रहेगा, but हाँ कहीं कहीं पे जरूरत पड़ सकता है. But the moment you are going for higher classes, this will be required. Yes. Now let's move to some shortcuts. So you just write it down. Few shortcuts. Now we are going to add two vectors having same magnitude. दो वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड है, उसको ऐड करेंगे हम अलग अलग एंगल के लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे फर्स्ट केस है, दिस इज ए वेक्टर, and in addition to we are going to add another vector having same magnitude and same direction, so this one will also be a vector. So then what is the angle between them? Angle between them is 0. So then what will be the resultant? You just put the value under root of a square plus b square plus 2ab cos 0. So angle जब भी 0 हो जाता है, हमारा resultant आ जाता है a plus b. That is the maximum value of the resultant. Last class में, कल का क्लास में मैंने बताया, right? So therefore in this case the resultant will be along them and it has a magnitude of 2a. वेक्टर को हटा देते हैं, एक का मैग्नीट्यूड a है, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड a है, मतलब दो वेक्टर 2a हो जाएगा. This is the first case. Secondly, let us consider two vectors are there having an angle of 60 degree. So this is one vector having magnitude a and this is another vector having magnitude a and the angle between them is 60 degree. Then याद रखना रिजल्टेंट उनका जो होगा एग्जैक्टली बीचों बीच जाएगा उनका, and its magnitude will be √3 times a. √3 times a. Yes. Next, let us consider the two vectors have an angle of 90 degree. So this is a vector having magnitude a. This is also another vector having magnitude a. So in this case, what will be the resultant? The resultant will be exactly in the middle direction, angular bisector, and its magnitude will be √2 times a.
Next, if two vectors have an angle of 120 degree, मान लो ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है ए, दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, और इस केस में तो ये 90 डिग्री हो गया, इस केस में ये 120 डिग्री होगा. Then again, the resultant will go exactly at the middle, and it will be having a magnitude of a. And lastly, if the two vectors has an angle of 120 degree, let us consider this is one vector that is having magnitude a, and let us consider this is another vector and this one is also having a magnitude of a. So in this case, what will be the resultant? In this case, the resultant r will be equal to 0. In this case, resultant r will be equal to a. In this case, the resultant r is equal to 2a. R is equal to root 3a. R is equal to root 2a. इसका एक सीक्वेंस समझो. जब एंगल 0 डिग्री है, then it is under root of 4 into a. जब एंगल 60 डिग्री है, then it is under root of 3 into a. जब एंगल 90 डिग्री है, then it is under root of 2 into a. जब ये एंगल 120 डिग्री है, then it is under root of 1 into a, which is coming out to be a only. And lastly, this one is resultant is under root of 0 into a. This is coming out to be 0. And in this case, root 4 is coming out to be 2. ये शॉर्टकट बहुत सारी जगह में काम में आएगा तुम्हारा. Yes. Yes, sir. Okay, so let's move ahead. मैं ये शॉर्टकट्स का और प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ. तुम बिना यूज किए वो फॉर्मूला को, जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, इसका आंसर बताना. ठीक है. Question number 1. Let us consider here is one vector having a magnitude of 2 and this is another vector having a magnitude of 3. What will be their resultant without using the formula? क्या हो जाएगा resultant? 12. Sorry, your voice was not audible. Sir, 12. नहीं. कौन सा बेसिस में ये 12 हुआ? सर लेकिन इसका तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है ना, तो शॉर्टकट कैसे लगाएंगे? हाँ, तो मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला को तो हम यूज कर ही नहीं सकते. याद करो, कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था. फॉर्मूला मतलब ये देखो, whenever theta is equal to 0, the resultant has a maximum value and it is equal to a plus b. Yes, sir. Yes or no? So in this case, you see angle between them is 0 degree. Then what will be the resultant? 5. Yes. So therefore resultant will be equal to 5. Correct. और उनके बीचों बीच से जाएगा वो, ऐसे जाके बीचों बीच से जाएगा. Okay, next question. Let us consider here are two vectors. It is having a magnitude of 8 and this one is also having a magnitude of 8. बताओ resultant कितना हो जाएगा? So root 2 8. Yes, very good. So resultant will be equal to root 2 into 8. So that will be equal to 8 root 2. Directly, तुम अपना फॉर्मूला भी आर का अगर फॉर्मूला भी पुट करोगे तो then you will be getting this answer only. Yes, sir. Okay, next. Let us consider in this case I am giving you the question that now इस तरह से दो वेक्टर है. इसका मैग्नीट्यूड है मान लो 12 और इसका भी मैग्नीट्यूड है मान लो 12 और ये वाला एंगल जो है दिस वन इज गिवन एज 60 डिग्री. बताओ क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? So 12. Yes, it will be 12 because the angle between them is not 60, it is 120 degree. ये एरो हेड इस तरफ है ना,
So therefore इसको अगर आगे बढ़ाएंगे then this angle will be the angle between them, that is 120 degree. 120 डिग्री के लिए ये सेम रिजल्टेंट आएगा. So therefore it will be equals to 12. Very good. अच्छा, मैं अगर तुम्हें पूछूं कि ऐसे करके दो वेक्टर है, this is 7, let's consider this one as 6, this one is 6 and the angle between them is 60 degree. बताओ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 6√3. 6√3. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. बीचों बीच से जाएगा एग्जैक्टली, एंड इन दिस केस दिस वन विल बी 6√3. अच्छा, इस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? देखो ये r को अगर मैं थोड़ा आगे लेके आ जाऊंगा, दिस वन विल आल्सो बी 12 और ये हो जाएगा 120 डिग्री और रिजल्टेंट जो हो जाएगा एग्जैक्टली मिडिल डायरेक्शन में हो जाएगा. दिस वन विल बी द रिजल्टेंट. r इज इक्वल टू 12. करेक्ट. यहाँ पे भी हम अगर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन कर देंगे तो फिर भी ये ऐसा आएगा. देखो ये भी r is equal to 12, right? Okay, so this is all about vector addition. Now next let's move to vector subtraction. Here you understand the concept that whenever I am talking about vector subtraction, just like this is vector A minus vector B, I want to find it out. So what does this mean? This means nothing but this is equal to vector A plus minus of vector B. उसका मतलब क्या है? Vector subtraction is nothing but एक vector को minus करके उसके साथ add कर दो. So that is what is vector subtraction. So in this case you see, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक vector है A vector, and यहाँ पे एक वेक्टर है, this one is B vector and the angle between them is given as theta. So I want vector subtraction. Vector subtraction चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा? B वेक्टर को पहले मैं माइनस B वेक्टर कर लूंगा. So माइनस B वेक्टर बोलने से ये आ जाएगा, this one is minus B vector and the angle between them is pi minus theta. Yes or no? This one will be pi minus theta. Now apply the Pythagoras theorem. अभी हम क्या करेंगे? वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब ये दोनों वेक्टर को हम खाली ऐड कर देंगे. So apply the parallelogram law of vector addition. So ऐसे करके एक parallelogram बनाएंगे and this one will be the resultant. This one will be the resultant R. Yes or no? So इस केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा मुझे बताओ? Sir, r is equal to a square plus b square. नहीं, r is equal to अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ये माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? माइनस b फैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? b. So this one will be b square plus 2 into magnitude of a into magnitude of b into cos of angle between them. उन दोनों में एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा. So cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? sin theta. नहीं, cos a माइनस थीटा क्या होता है? Sir, cos theta. नहीं, cos a माइनस b का तो मुझे फॉर्मूला बताओ. Sir, cos A into cos B plus sin A into sin B. Very good. यूज कर लो. So it will be equal to cos pi into cos theta plus sin pi into sin theta. sin pi का तो वैल्यू 0 होता है इसलिए सेकंड टर्म कट गया. पहला वाला टर्म बचा क्या? cos pi into cos theta. cos pi का वैल्यू कितना होता है? -1. So therefore यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा. So therefore resultant will be getting it to be r is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta. इसका स्क्वायर रूट. यस. एंड रिगार्डिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन हमारा क्या आ जाएगा? डायरेक्शन देखो ये वाला आएगा, इस तरह से हम डिनोट करेंगे. यस और नो?
इस तरह से। So let's consider this as beta. So therefore in this case tan beta क्या हो जाएगा, tan beta that is equals to b sin theta, b sin pi minus theta, b sin theta divided by a plus b cos theta, cos pi minus theta. sin pi minus theta क्या हो जाएगा, सर sin a minus b का फॉर्मूला क्या होता है, सर माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये, यस वेरी गुड। सो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और इसका वैल्यू तो हमें पता है माइनस कॉस थीटा, ऑलरेडी हमें पता है। तो देयरफॉर व्हाट वी गेटिंग इज दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ b sin theta divided by a minus b cos theta. This one will be tan beta. So अच्छा दूसरा कलर का यूज कर लेता हूँ मैं। सो ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला रिगार्डिंग द डायरेक्शन, और ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड। सो इन शॉर्टकट में अगर इसको याद रखने के लिए क्या बोलता हूँ ना, तुम्हें अगर a माइनस बी वेक्टर निकालना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b अगर निकालना है, तो कुछ नहीं, हमने क्या किया, b का डायरेक्शन को चेंज करके माइनस बी वेक्टर हमने निकाल दिया और ऐड करते हैं। तो फिर हमारा जो भी फॉर्मूला था वेक्टर एडिशन का, ये फॉर्मूला था वेक्टर एडिशन का, जहां जहां पे b दिख रहा है वहां वहां पे माइनस बी पुट कर लो, तो फिर ये b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, ये b स्क्वायर ही रहेगा। ये b क्या हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, सो दैट ये माइनस आके इसको माइनस कर देगा, सो माइनस 2ab cos थीटा रह गया। सो सिमिलरली ये b क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, सामने में एक माइनस रहेगा, और ये b भी माइनस बी हो जाएगा, तो ये प्लस को माइनस कर देगा। सो देन विल बी गेटिंग द दिस फॉर्मूला सेम, खाली b की जगह में माइनस बी पुट कर लो, यू आर गेटिंग द आंसर। और यहाँ पे ये माइनस किस चीज को सिंपलीफाई कर रहा है, दिस माइनस इज सिंपलीफाइंग दैट our resultant is in the clockwise direction to a vector. प्रीवियस केस में क्या होता था, वो एंटी क्लॉकवाइज में आता था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव हम लेते हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज में आ रहा है इसलिए हम इसको नेगेटिव पुट करें। सो दिस माइनस डिनोट्स दैट दिस वन इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, यस। सो दिस इज व्हाट इज वेक्टर सबट्रैक्शन। चलो वेक्टर सबट्रैक्शन करके तुम मुझे रिजल्टेंट बताने लगे, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so now let's move ahead and apply the vector subtraction. Question number 1. Let's consider here are two vectors. This one is a vector, having a vector and its magnitude is equal to 10, and this is b vector and its magnitude is equal to 8, and angle between them is 60 degrees. Calculate the resultant. a minus b vector का resultant calculate करो। Sir, अंडर रूट ऑफ 84 यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? सर 60 है ना, तो उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल cos 60 होगा ना, cos 60 ही हम यूज करेंगे। सर आप तो बोले थे पाई माइनस थीटा। फाइनली अल्टीमेटली हम आंसर में कहां पे पहुंचे,
आंसर में हमें हमें क्या मिल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा मिल रहा है, पाई माइनस थीटा तो नहीं मिल रहा ना। हम फॉर्मूला को पुट करेंगे ना, फॉर्मूला में ये क्या बता रहे हैं, तुम अगर पाई माइनस Yes, थीटा को पुट करोगे तो इसको तुम्हें प्लस करना होगा, yes, sir. और खाली थीटा को अगर पुट करोगे यहाँ पे माइनस कर सकते हो। इसलिए मैंने तुम्हें बोला ना, वेक्टर एडिशन में जो भी रिजल्टेंट आया है उस रिजल्टेंट में बी के जगह में माइनस बी खाली पुट कर लो, यू आर गेटिंग द आंसर। एंगल में भी Yes, बी sir. के जगह में खाली माइनस बी को पुट कर लो, यू आर गेटिंग द आंसर। सो यूजिंग दैट फॉर्मूला जब मैं इसको पुट कर रहा हूँ तो फिर ये अंडर रूट ऑफ 84 आ रहा है। एक बार ट्राई करके देखो आ रहा है कि नहीं। Sir, मेरा रूट 100 क्यों आ रहा है? ऐसा क्या, देखो Yes, sir. अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 8 का Yes, sir. स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 2 into 10 into 8 into cos 60। cos 60 का Yes, वैल्यू sir, कितना आ गया। आ जाएगा? Yes, sir. ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर दो, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर दैट दिस इज 100 प्लस 64 माइनस 80 का स्क्वायर रूट, so you will be getting it to be 84 Under का। root of 84. Yes, sir. Done? Yes, Okay. sir. Second question. Let's consider that here are two vectors. One is having magnitude 8, another is having magnitude 6. निकालो vector A minus B. Sir, 10. Can I? Okay. Yes, Answer sir. will be correct. Next. Question number 3. Let's consider two vectors are there. This is having a magnitude of 5. This is having a magnitude of 4. And the angle between them is given as 120 degree. You just calculate vector A minus vector B. That resulting. Sir, under root of 61. Under root of 61 आ रहा है? Yes, sir. Okay. Hopefully correct होगा. Okay, so that is the point. Next, let's move to the next concept. देखो जैसे कि मैंने देखा है ना, हमने देखी है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इजंट इट? सो लेट्स कंसीडर, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ पे मैंने एक बॉडी को लिया, लेट अस कंसीडर दिस इज द एक्स एक्सिस, बोलता रहा है बॉडी। सो लेट अस कंसीडर दिस इज ए फुटबॉल, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो मैंने इसको फोर्स दिया इस डायरेक्शन में, this is the force. In which direction do you think consequence will be there? Sir, in the same direction. In the x-axis, isn't it? Yes, So in sir. this Yes, case, sir. the acceleration that will be getting will be along the x-axis. Because the force is along the x-axis, therefore acceleration is along the x-axis. तो बॉडी कुछ टाइम के बाद यहाँ पे होगा, 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 इसी तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा। Now let us consider कि मैंने ये फोर्स को हटा दिया और मैंने एक फोर्स दिया इस डायरेक्शन में, ऊपर वाला फोर्स को मैंने हटा दिया।
इस डायरेक्शन में एक फोर्स दिया, what do you think in which direction its consequence will be there? Definitely in the Sir, upward direction, along the y-axis. along the y-axis. Very good. So that means कुछ टाइम के बाद बॉडी यहाँ पे होगा, कुछ टाइम के बाद बॉडी यहाँ पे होगा, कुछ टाइम के बाद बॉडी यहाँ पे होगा. So it is moving along x-axis, y-axis. Previously it was moving along x-axis. Now let us consider, मैं इसके कोई एक बीच के डायरेक्शन में मैंने फोर्स को दिया. So definitely the acceleration or the consequence will be along this direction. So मान लो बॉडी कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहुंच गया. Yes. So that means देखो x एक्सिस में उसने मूव किया है कि नहीं. x एक्सिस में देखेंगे तो इसने इतना डिस्टेंस मूव किया है कि नहीं. Yes. So that means we can understand it here that there is a consequence along x axis. Similarly, there is a consequence along y axis. Am I connected? No? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो देखो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि बॉडी एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और बॉडी वाई एक्सिस में भी जा रहा है. लेकिन देखो क्या मैंने फोर्स एक्स एक्सिस में दिया? नहीं दिया. Still the body is moving along the x axis. Did I give any force along the y axis? No, I did not. Still the body is moving along the y axis. What does that mean? Somehow it is getting a force along x axis and along y axis. So ये जब हम फोर्स दे रहे हैं तभी उसको x एक्सिस में भी एक फोर्स मिल रहा है, y एक्सिस में भी एक फोर्स मिल रहा है. मतलब इसका एक पार्ट या फिर इसका एक इफेक्ट along the x एक्सिस भी डाल रहा है ना, और दूसरा इफेक्ट along y एक्सिस डाल रहा है. So that means ये फोर्स को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं. One is along x axis and another is along y axis. X axis के पार्ट की वजह से there will be consequence along x axis. That means the body will move along x axis. Y axis के पार्ट की वजह से there will be consequence along the y axis. That means the body will move along the y axis. And hence यहाँ से हमें एक चीज तो आराम से समझ में आ रहा है that the force can be broken down into two perpendicular components. One is along this direction, another is along this direction. That means angle between them is 90 degrees. So a force can be broken down into two perpendicular components. Not only a force, any vector can be broken down into two components in perpendicular direction. So कोई भी वेक्टर हो उसको हम तोड़ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो दो कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल. And the process of breaking it down into two perpendicular components is called as vector resolution. So let's move ahead and study about vector resolution. Write down the headline. Now what is vector resolution? यहाँ पे लिख सकते हो shorthand में. Breaking the vector into the process of breaking the vector into two perpendicular components. So चलो हम देखते हैं कि तोड़ने से, अच्छा दो कंपोनेंट में तो हमने तोड़ देंगे, तो फिर कौन सा कंपोनेंट का वैल्यू कितना कितना होगा उसके बारे में चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं. नाउ लेट अस कंसीडर अबाउट द वेक्टर. So let's consider that this is the y axis and this is the x axis. मान लो ये x axis है और ये y axis. मान लो कि मेरा एक वेक्टर है which is along this direction. ये है मेरा वेक्टर, मान लो वेक्टर r है, r वेक्टर, and it is making an angle theta. x axis के साथ ये theta angle create कर रहा है. Now we are going to break it into two perpendicular component, isn't it? मान लो कि एक perpendicular component ये है. Let us consider this as rx vector. मान लो दूसरा perpendicular component ये है. Let us consider this as ry vector. Yes. So that means I can write it down in short that
आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हमने तोड़ दी। आर एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, आर एक्स वेक्टर इज आर एक्स इंटू आई कैप, पढ़ाया था मैंने। आई कैप इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, सो आर एक्स आई कैप। आर वाई वेक्टर को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज आर वाई जे कैप। यस और नो? यस सर। ओके, अभी देखो इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ पे ले आता हूँ, पैरेलल शिफ्टिंग करके मैंने यहाँ पे लेके आ गया। यस, सो दिस वन इज आर वाई वेक्टर। अभी देखो मैं यहाँ पे ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं? यस सर। देखो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, दैट मींस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज एप्लीकेबल। दैट मींस आर एक्स वेक्टर यहाँ पे, आर वाई वेक्टर यहाँ पे, ये हो गया उन दोनों का रिजल्टेंट। इन दोनों को ऐड किए तो फिर यहाँ पे आर वेक्टर आ गया, आर वेक्टर को तोड़ा तो आर एक्स वेक्टर और आर वाई वेक्टर आ रहा है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बारे में चलो हम यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तुम मुझे बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा? सर आर आर वाई बाय आर। आर वाई बाय आर, वेरी गुड। एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आर एक्स बाय आर। आर एक्स बाय आर, वेरी गुड। सो दैट इज इम्प्लाइड देन यहाँ पे आर वाई क्या हो जाएगा? आर आर साइन cos थीटा, थीटा। नहीं आर वाई आर साइन थीटा होगा ना, हाँ सर। आर एक्स हो जाएगा आर कॉस थीटा। सो देखो यहाँ पे आर एक्स और आर वाई का वैल्यू को लेके जाके यहाँ पे पुट कर लो। सो आर एक्स आई कैप जो है ये हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो देखो कोई भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में मैंने तोड़ दिया कि नहीं, एक कंपोनेंट हो रहा है आर कॉस थीटा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हो रहा है आर साइन थीटा कंपोनेंट, दैट्स ऑल। यस, दो कंपोनेंट में मैंने बोल दिया। सो दिस इज आर एक्स वेक्टर और आर एक्स वेक्टर का वैल्यू आर कॉस थीटा हो रहा है, आर वाई वेक्टर का वैल्यू आर साइन थीटा। लेकिन ये दो कंपोनेंट में से कौन सा कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, कौन सा साइन थीटा कंपोनेंट होगा, ये अगर पूछा जाए तो फिर हम कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से देखो, whichever component is connected with theta, that component will be cos theta component. So therefore Rx is equal to R theta. And whichever component is away from the theta, that is sin theta component. That is why Ry is equal to R sin theta. और अगर हम ये कंपोनेंट दे दिया तो क्या हम एक्चुअल वेक्टर को निकाल सकते हैं? Is it possible? Yes, it is possible. How to find out the actual vector? You just do the vector addition of Rx vector and Ry vector. Rx वेक्टर और Ry वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, इसलिए जब भी वेक्टर एडिशन करोगे वो थर्ड टर्म cos थीटा वाला 2ab cos थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वो। Yes, so therefore here we can get that R can be written as under root of Rx square plus Ry square। अगर Rx Ry दिया हुआ है तो इसी फॉर्मेट में तुम R को निकाल सकते हो, या फिर दिस इज इक्वल टू R कर सकते हो तुम, this is equals to R under root of Rx square plus Ry square। अच्छा ऐसे तो मिल गया हमें, फिर डायरेक्शन कैसे मिलेगा? डायरेक्शन हमें यहाँ पे मिल सकता है that tan theta will be equals to Ry by Rx। तो देखो अगर वेक्टर दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है तो फिर हम इस तरह से कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, और अगर कंपोनेंट दिया हुआ है तो इस तरह से हम जोड़ के वेक्टर निकाल सकते हैं। So that means we can break a vector into two perpendicular component. We can add the two perpendicular component to get the vector. So both the processes are there. कैसे हमें r वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़े, एक rx एक ry। rx का वैल्यू r cos थीटा if it is connected with theta and ry का वैल्यू r sin थीटा। और अगर हमें rx और ry दे दिया तो फिर r कैसे निकालेंगे? यूजिंग अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर विल गेट r, and then tan theta is equal to Ry by Rx will be getting the value of theta। ठीक है, सो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करें। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा यहाँ पे तुम पहले लिख लो तुम्हारा काम क्या है। तो यहाँ पे तुम्हारे दो काम रहेगा,
लिख लो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, in the following questions, ये में देखो, resolve the vector in x and y components. Resolve the vector in x and y component. Second, represent r vector in terms of orthogonal unit vectors. Represent r vector in terms of orthogonal unit vectors. So देखो क्वेश्चन नंबर 1, मान लो ये दोनों है x एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे हमें एक वेक्टर दिया गया है, दिस वन ऑफ द वेक्टर, and it has a magnitude of 10 and it is making an angle, let's consider 60 degree with the x axis. तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, उसका कंपोनेंट्स निकालो x एक्सिस और y एक्सिस में। x एक्सिस में उसका कंपोनेंट जो हो जाएगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, दैट इज rx। y एक्सिस में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, वो ry। सो बीट a में देखो हमें पता है rx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ry इक्वल टू क्या हो जाएगा, rx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा r cos थीटा, दैट विल बी इक्वल टू r का वैल्यू 10 इनटू cos 60 is equals to 1/2, that will be equals to 5. Similarly ry का वैल्यू क्या हो जाएगा, ry का वैल्यू हो जाएगा r sin थीटा, r का वैल्यू 10 into sin 60 का वैल्यू √3/2, so therefore we will be getting it to be 5√3. yes, हमने x और y कंपोनेंट में इसको तोड़ दिया। now our next target is r वेक्टर को हम orthogonal unit vectors के terms में represent करेंगे। so therefore here you can write down that r vector that is equals to rx vector plus ry vector। rx vector का मैग्नीट्यूड कितना है देखो 5, और उसका डायरेक्शन क्या है x एक्सिस। सो हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड that is 5 into यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। x एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, i cap, so this one will be i cap। So similarly ry vector क्या हो जाएगा, ry vector is equals to its magnitude that is 5√3 into unit vector along y axis that is j cap। so therefore इसका वैल्यू हो जाएगा 5√3 j cap। बताओ इसमें से कौन सा चीज तुम्हें बताऊं एक और बार, or is it clear? Is it clear? Yes sir. Okay, ठीक है, if it is clear then you just solve this question। मान लो यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लो यहाँ पे मैंने तुम्हें एक वेक्टर दे दिया ऑफ मैग्नीट्यूड 20 एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बताओ इसका rx का वैल्यू क्या होगा, ry का वैल्यू क्या होगा, और r वेक्टर क्या हो जाएगा। फिर rx का वैल्यू होगा 10√3, rx का वैल्यू हो जाएगा 10√3, ओके। और y का वैल्यू हो जाएगा 10, ry का वैल्यू हो जाएगा 10, और r वेक्टर का कंपोनेंट होगा 10√3 i cap plus 10 j cap। गुड, दिस विल बी द आंसर। सो लेट्स मूव अहेड, आगे में बढ़ते हैं हम। Let us consider these are the x and y axis, and let's say there is a vector having magnitude of 15 and this angle is given as 37 degree। निकालो और बताओ rx, ry, r vector।
क्या हुआ, हो पाएगा कि नहीं? सर sin 37 cos 37 का वैल्यू नहीं पता। अच्छा, तुम्हें मैंने वो 3 4 5 का नहीं बताया था क्या? नहीं सर। नहीं, देखो, if I'm taking a right angle triangle that is 3 4 5, तो फिर मान ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बताओ इसमें से 3 कौन सा होगा, 4 कौन सा होगा, 5 कौन सा होगा? डेफिनेटली हाइपोटेनस ही 5 होगा। 3 4 में से कौन सा 3 होगा, कौन सा 4 होगा, बताओ? फिर 3 परपेंडिकुलर। हाँ, ये हाइट वाला जो होगा ये होगा 3, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा 4। यस और नो, बिकॉज लंबा दिख रहा है, इजंट इट? सो याद रखना 3 4 5 जब ये पाइथागोरस ट्राइंगल, सॉरी ये राइट एंगल ट्राइंगल जब बनता है, इसका एंगल्स रहता है 37 डिग्री, 53 डिग्री एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री तो हमें दिख रहा है, बताओ 37 डिग्री कौन सा होगा और 53 डिग्री कौन सा होगा? सर 3 और 5 के बीच जो एंगल बन रहा है वो 37 है। 37 ये वाला नहीं, 3 3 सॉरी का, ये 53 होगा। हाँ छोटा वाला साइड का सामने वाला छोटा एंगल होगा, तो ये वाला हो जाएगा 37 डिग्री और ये वाला हो जाएगा 53 डिग्री। तो फिर यहाँ पे तुम मुझे बताओ साइन 37 कितना हो जाएगा? और sin 37 हो जाएगा 5, एक मिनट सॉरी सर, 3/4 3/4 सॉरी 3/5। याद है, इसलिए मैंने तुम्हें एक प्रोसेस बताया था। साइन हाँ थीटा सर। मतलब फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा मतलब फॉर्मूला क्या बताया था? P/H। Again, that day I had told you, don't memorize the formula in this format. एक और तरीका मैंने बताया था, simple front side by hypotenuse. Yes sir. So if I am saying you sin 37 front side divided by hypotenuse 3/5. If I am talking about cos 37, then connected side divided by hypotenuse. If I am talking about tan 37, then front side divided by connected side. If I am talking about sin 53, then front side divided by hypotenuse. If I am talking about cos 53, then front side divided by connected side. If I am talking about tan 37, then front side divided by connected side. If I am talking about sec 53, then hypotenuse divided by connected side. इसलिए मैंने तुम्हें उसी तरह से याद रखने के लिए बोला था। यस, ओके। सो इसी हिसाब से बताओ sin 37 का वैल्यू क्या आ गया हमारा, और उसका वैल्यू को आंसर क्या होगा सर? आंसर क्या होगा? sin 37 तो तुम्हें अभी पता चल गया ना, sin 37 इज इक्वल 3/5। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना, इसका वैल्यू 6 8 और 10 के केस में भी ये लागू होगा। इसका वैल्यू 9 12 15 के केस में भी लागू होगा। इसका वैल्यू 12 16 20 के केस में भी यही एंगल्स रहेंगे, राइट? ठीक है, याद रखना ये चीज। चलो, सर RX होगा 12, RY होगा 9 और R वेक्टर होगा 12 I कैप प्लस 9 J कैप। Rx 12 होगा, 15 sin 37, sin 37 मतलब क्या 3/5, तो 5 3 जा, ये 9 होगा, Rx 9 होगा। सर RX cos थीटा होगा ना, sin थीटा तो नहीं होगा। हाँ, करेक्ट। So it will be 15 into
4 by 5. Five. Correct. So 12, 9. This one will be 12 I cap plus 9 J cap. Yes? Clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ. मान लो let us consider this is y axis, this is x axis. ये मेरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है मान लो इसका मैग्नीट्यूड है मान लो 100 और ये एंगल मान लो दिया हुआ है 60 डिग्री. अब बताओ आर एक्स आर वाई आर वेक्टर. सर आर एक्स होगा 5√3, आर वाई होगा 5. आर एक्स 5√3 यस सर, और आर RY वाई 5, 5 और आर वेक्टर होगा 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप. आंसर इज रॉन्ग. सोचो सोचो एक जगह में मिस्टेक है, छोटा सा माइनर मिस्टेक है. बस देखो हियर यू सी मैंने क्या क्या था. इस केस में यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर एक्स कॉम्पोनेंट और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर वाई कॉम्पोनेंट. तो फिर बताओ आर एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा आएगा. देखो यस सर. आर वाई क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा आएगा. क्यों बताओ, बिकॉज आर वाई इज कनेक्टेड विथ थीटा, थीटा के Yes, साथ sir. आर वाई कनेक्टेड और आर एक्स इज द डिस्टेंस कॉम्पोनेंट. सो देयरफॉर जस्ट पुट द वैल्यू, आर का वैल्यू पुट कर लो 100, साइन 60 कितना होता है, √3/2. सर मैं That वो will be coming up 10, मैं 100 को 10 वही यस यस यस, आर को तुम 10 ले लियो इसलिए मिस्टेक हुआ है. सिमिलरली ये जो हो जाएगा तुम्हारा 50 हो जाएगा, आर का वैल्यू 100 थीटा का वैल्यू 60 अगर पुट कर लोगे, सो 100 cos 60 will be 50 and therefore the answer will be coming out to be 50√3 I cap plus 50 j cap. Yes, done. चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 गया 5. ये है मेरा x एक्सिस और ये है मेरा y एक्सिस. And let us consider that the vector is given at here. इसका मैग्नीट्यूड 10 है और इसका ये वाला एंगल दिया गया है 120 डिग्री. निकालो आर एक्स आर वाई आर वेक्टर.
सर कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। कंफ्यूजन हो रहा है? देखो जी, सिंपल, ये एंगल कितना हो जाएगा? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। देखो इसका अगर दो ठो कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट तो डेफिनेटली इधर ही आएगा, यस सर। दूसरा कंपोनेंट किधर, इधर नहीं आएगा। हाँ सर। यस, सो इसको ले लो rx, इसको ले लो ry। ry का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 cos 30, और rx का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 sin 30। यस और नो? 10 यस सर। sin 30 will be coming out to be 5, 10 cos 30 will be coming out to be 5 root 3। यस सर। Yes, so Rx is coming out to be 5, Ry is coming to be 5 root 3। अच्छा, रिजल्टेंट R वेक्टर क्या हो जाएगा? R वेक्टर हो जाएगा, इट विल बी Rx into माइनस I कैप होगा, देखो नेगेटिव दिशा में ना, प्लस यस सर। दिस वन विल बी Ry into J कैप। सो देयरफॉर Rx का वैल्यू पुट कर लो 5, सो माइनस 5 I कैप प्लस 5 root 3 J कैप। इज इट क्लियर? यस सर। चलो, इफ दिस वन इज क्लियर तो फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6। मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, और मेरा वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड है मान लो 50, और ये वाला एंगल दिया गया है 60 डिग्री। निकालो आर एक्स, आर वाई, आर वेक्टर। सर आर एक्स होगा 25 रूट 3, आर वाई होगा 25, और आर वेक्टर होगा -25 रूट 3 आई कैप माइनस 25 जे कैप। 25 जी क्या? वेट ए सेकंड, ये हो जाएगा आर एक्स, ये हो जाएगा आर वाई, आर एक्स हो जाएगा 50 sin 60, एंड आर वाई हो जाएगा 50 cos 60। cos 60 का वैल्यू 1/2, सो दिस वन इज करेक्ट 25, और ये भी 25 रूट 3। सो यस करेक्ट। आर वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर एक्स इंटू माइनस आई कैप, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, प्लस आर वाई इंटू माइनस जे कैप, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है। सो देयरफॉर आंसर विल बी गेटिंग टू बी दिस वन। करेक्ट, गुड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ओह ये क्या हो गया, और मान लो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और मान लो ये है हमारा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड है 20, और ये वाला एंगल दिया गया है 30 डिग्री। चलो निकालो आर एक्स, आर वाई, आर वेक्टर। सर आर एक्स होगा 10 रूट 3, आर वाई होगा 10, और आर वेक्टर होगा 10 रूट 3 आई कैप माइनस 10 जे कैप। 10 रूट 3 आई कैप माइनस 10 जे कैप। करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का। मान लो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। मान लो जब हमने वेक्टर विजुअलाइजेशन किए हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है हमारा इस एक्सिस में,
और इसका वैल्यू है मान लो 6 और दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है इस एक्सिस में और इसका वैल्यू है मान लो 8. कैन यू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन? Yes. उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकाल. Sir, and sorry, yoga R का वैल्यू होगा 10. R का वैल्यू 10. वेरी गुड. क्योंकि इन दोनों का खाली वेक्टर एडिशन ही तो करना है ना. That is because the root of 6 का square plus 8 का square. You'll be getting it to be 10. Correct. Sir, सर और थीटा का वैल्यू आएगा 37 डिग्री. कितना? 37. 37 डिग्री नहीं. देखो RY का थोड़ा सा पैरेलल शिफ्टिंग कर दो. ये आ जाएगा तुम्हारा RY. क्या समझो? दैट इज 8 और ये है तुम्हारा RX दैट इज 6. तो फिर इस डायरेक्शन में होगा वेक्टर एडिशन अगर कर देंगे ये हो जाएगा रिजल्टेंट और ये हो जाएगा थीटा. सो दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ RY by RX. हाँ सर 8 by 6 4 by 3. That is equal to tan inverse of 8 by 6. 8 by 6 is equal to 4 by 3. Tan inverse of 4 by 3 कितना होता है? 53 degree. Yes. So 53 is the direction. Yes. Okay. So this is all about vector resolution. I believe that vector resolution and vector subtraction is clear to you. Last one thing is that is vector multiplication. वो हम